honest with yourself that जो भी आप टाइम पुट इन कर रहे हो, आर यू स्टडीइंग इन दैट टाइम? जो आप टारगेट सेट कर रहे हो वो रियलिस्टिक है कि नहीं? Good evening, everyone. I welcome you all in yet another episode of Untangling UPSC Inside the Mind of UPSC Toppers. Today, we are thrilled to invite a very special guest, Atul Singh, in this podcast. Atul has secured an All India rank 67 this year in UPSC CSE examination. However, this journey was not so easy. Before this, also, Atul has given 2 interviews. So, Atul, I welcome you in this podcast. Hi Nitya, hello everyone. I hope everyone is having a good day. This is Atul Singh. I secured rank 67 this year in UPSC CSE. Let's see where this conversation goes. Okay. So first of all, I would like to ask, as you had done your engineering from NIT Allahabad, then you worked also. So what motivated you to join the civil services? That's a very interesting question, and it was asked to me in interviews as well. So, see, I come from Ranchi, a place in Jharkhand. So, from places like these, the best of aspirations is to become an IAS. When you ask people around what you want to become, most of them, as children, will say IAS. And if you are good at academics, people will push you into it, that you must try for it. So from a young age, even though I had no idea what this meant, there was this aspiration that I have to become this. But over time, when you see what the administration does, you know, what it does for schools, what it does for health, what it does for law and order, what it does for infrastructure, then you come to realize as the exposure improved, say in college and when I was working, that the scale and the diversity that the government has, very few jobs in India offer that. And that is true even for today. So I think that was my biggest motivation why I left my job and started pursuit for this coveted exam. I completely agree. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्टोरी भी बहुत ज्यादा आपकी स्टोरी से रिलेट होती है. Like this happened during my childhood as well. Everyone praises an IAS officer और हर किसी को लगता है बस हमारा बच्चा बने तो IAS ही बने. So I also decided like that. But yes, when I grown up, so I realized that the scale of diversity that it offers, this can be offered nowhere else. I completely agree. इतनी diverse आपकी posting होती है और diverse roles आपको मिलते हैं. किसी दिन किसी ministry में हो आप, फिर किसी और ministry में हो. So that is okay. And not only diverse for us, no, for the diversity in terms of differences that you can bring. If you are a teacher, you will bring positive differences, hopefully, in education. If you're a good doctor, you'll do it in health. If you are a good, say, a police servant, you will do it in law and order. But an administrator, an IAS officer, can do it across domains. And that is a huge thing, which was an important mover for me. Yeah, and I believe that your works will really bring differences in a lot of domains. Okay. I hope. Next thing that I would like to ask is, what were the resources that helped you the most in this preparation? So before that, I'll just tell people because I did something which is not so common. So I had the option of moving to Delhi, which a lot of people do, or staying at home, which again a lot of people opt for. Both have their pros and cons, but what I did was I took a place for myself near my home, so that I have that connect with home, but I did not have to go to Delhi. Because I personally have this thing that if you're completely, removed from your social setting, it takes some time to adjust to it. And once you are so removed, you might get carried away in a lot of things which are not conducive for this exam. So I did that. And now coming to the resources, this was possible because I think the internet space has democratized UPSC preparation a lot. You have so many toppers channels, Telegram, YouTube, the coachings have their own websites where you get quality content. Plus, if you don't understand something, 1,000 people are explaining it, and some good teachers are also there. The government is doing its part. You have IGNOU, you have IIT, teachers from IIT explaining things to you. So if all of this is there and I have a setting of my own,
Why would I go anywhere? So this was my resource revolved around, if I could put it crisply, firstly, the standard books, starting from NCRT. I did them from 6 to 12, and I liked them a lot. I made very short notes from them. And my thumb rule was that it has to be around 10% of the total pages. So then I moved on to the standard books, Lakshmikant, Spectrum. Then for environment, we can go for PMF or Shankar, both work. And likewise. After that, whatever lacuna I felt, I supplemented them with online resources, which I mentioned earlier. So this was my resource. And we'll discuss for optional, alag se, because I think it needs a separate thing for its own. So this was my GS strategy and resources. आई फील दिस वॉज वेरी यूनिक, मतलब आप घर के पास भी हो और क्योंकि और दैट रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट एज एट होम इज नॉट डेविएटिंग यू एज वेल, क्योंकि कई बार क्या होता Yes, है कि लोगों को ऐसा होता है कि घर में वैसी पढ़ाई नहीं हो रही है, विच आई समटाइम्स अग्री कि हर किसी के घर में वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती। yes, तो ठीक है, आप घर से थोड़ा तो उसमें जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोल्यूशन निकालते हैं कि हम दिल्ली मूव कर जाते हैं। नाउ सपोज इफ right, यू आर फ्रॉम right. वेस्ट बंगाल एंड यू आर मूविंग टू दिल्ली, योर होम इज सो फार। अब यहाँ पे क्या Mm, होता है कि अगेन दैट एनवायरनमेंट पूरा हर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव भी है कुछ जगह, जैसे पीजी में वो mm. वही बहुत ही ऑयली स्पाइसी फूड, देयर इज नो वन टू True, लुक true, आफ्टर यू। और true. अगेन एकदम से आप कहीं से बहुत दूर से, इसमें काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि मे बी ट्वेल्थ भी उन्होंने अपने घर से किया है, कॉलेज भी वहां से किया है, एंड फर्स्ट टाइम दे आर शिफ्टिंग टू दिल्ली। अब इसमें Mm, लोगों को ये mm, रियलाइज नहीं होता है कि होम सिकनेस जैसी भी कोई चीज होगी यहाँ पे। mm, फिर mm. जरूरी नहीं है कि आपको आते ही कुछ एक एकदम से फ्रेंड सर्कल मिल जाए, तो True, true. आपको कोप अप करने में ही 2 3 4 महीने लग जाते हैं, जिसमें कि कई बार अगर Right, कोई यहाँ का खाना अगर उसे सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप पहली बार घर से बाहर निकल रहे हो, आप एकदम से यहाँ का खाना खाओगे आपको नहीं सूट करेगा, तो उसमें लोगों की तबीयत भी right, बहुत खराब हो जाती है। तो आई थिंक ये आइडिया काफी लोग फॉलो कर सकते हैं कि आप घर से कहीं दूर, मे बी यू कैन शिफ्ट टू योर कैपिटल, right, right. स्टेट कैपिटल And में आप। there are so इतने छोटी छोटी चीजें हैं, like food you mentioned, no, it is हम्म important to a lot of people. अब if you get decent food, you can get tiffin भी घर से if you are close enough, है हम्म ना? If you get decent food, you will like to study more. ठीक? यस Now say you go to Delhi, you have a friend circle to whom you are committed. ये सब दिक्कतें यहाँ पे नहीं होंगी. यहाँ पे people know what your time is, कैसे उसको utilize करना है. तो सेल्फ कंट्रोल को भी बेनिफिट करता है. हम्म इफ यू आर फीलिंग होम सिक, आप दिल्ली में क्या करोगे, बाहर क्या करोगे, यू विल वेस्ट 2 3 days यही सोचने में. बिल्कुल। यहाँ पे यू कैन एक्चुअली गो, एक दिन घर वालों के साथ रहो, कम बैक टू योर स्टडीज. तो आई फाउंड इट वेरी प्रोडक्टिव. Hence, through your medium, I wanted to share this also. That was very unique and innovative. Okay, so next that I would like to ask is, what was your daily routine and timetable? क्या हर दिन आप 16 घंटे पढ़ते थे, जो एक मिथ बना आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो एंड आई हैव नेवर बिलीव्ड इन दिस नोशन कि 16 घंटे पढ़ना होता है. The earlier exams that I had cracked, JE वगैरह में भी, I have never studied उतना. What matters is, and a lot of good people will tell you this, and you know this, कि productivity rather than timing, है ना? तो my aim was कि there should be a time at least दिमाग में, कि let's go for say 7 8 hours, जो मेरे दिमाग में रहता था. हम्म उससे कम ठीक नहीं रहता. मतलब यू कैन नॉट गो फॉर 1 2 hours कि मैं बहुत प्रोडक्टिव रहूंगा 1 2 घंटे या रहूंगी 1 2 घंटे. दैट डज नॉट वर्क. एट द सेम टाइम आई स्ट्रिक्टली बिलीव कि डे के कुछ कमिटमेंट्स होने चाहिए स्लीप के प्रति, टुवर्ड्स योर हेल्थ एंड टुवर्ड्स योर सोशल एंड इमोशनल वेलबींग. ठीक है? देन जो आप 8 घंटे लगाते हो, दैट विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स. उस 8 घंटे के साथ यू नीड कंसिस्टेंट 8 hours. ठीक है? Every day you need to put in those 8 hours. So people who work in offices, they are putting in 8 hours daily, है ना? They yes can do it consistently because वो एक time है. हम्म If you tell someone to work 14 14 घंटे, 15 15 घंटे, WHO हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाए, लेबर लॉज में भी ये इनवैलिड है. It does not work. It's a total myth. ठीक है? Now, अब जब 7 8 घंटे हो जा रहे हैं, तो you have still 2/3 of the day with you. हम्म So I divide the day into 3 parts. One part is for sleeping, 7 to 8 hours wala. Not 8 hours of sleep, 7 hours in which 1 घंटा you give to anything.
8 hours for study, and जो remaining 8 hours है, that will take up जो भी आपको एक जैसे physical activity I like to do and I would advise that people do it. एक भी physical activity, जुम्बा कर लो आप, इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर लो, बास्केटबॉल खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, कुछ भी. देन गो फॉर थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह, एक गो फॉर अ वॉक, जो भी आपको एक एक्टिविटी विच डिटैचेस यू फ्रॉम दिस मंडेननेस दैट यू आर गोइंग इन. आप एक लूप में चले जाते हो, यू स्टार्ट थिंकिंग आउट थिंग, जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस, गिव 2-3 आवर्स दिन का उसके लिए. तो ये मेरा रूटीन था. तो आई यूज टू चेंज जो भी मेरा लेजर आवर्स है, आई गो फॉर लॉन्ग वॉक शाम को. दैट इज अ थिंग दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हाफ आवर टू 1 आवर का एक वॉक, देन आई गो फॉर हाफ आवर का वर्कआउट कोई भी. उसके बाद आई विल गो फॉर अपना अर्ली डिनर, उसके बाद स्टडीज वगैरह. एंड एक और चीज जस्ट आई ऐड कि इट डज नॉट हैव टू बी अ वेरी रिजिड रूटीन. आई थिंक इट वर्क्स फॉर अ फ्यू पीपल बट माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन. कि यू नो पीपल हैव दिस कि 3 बजे उठेंगे, ये करेंगे और ये इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे. मेरे लिए इट वर्क्स कभी कभी, बट देर इज अ रूटीन सैचुरेशन ऑल्सो. यस. When you follow this no every day, so your mind is like कि अब नहीं करना है ये वाला. ठीक है. तो डोंट बी सो रिजिड उसके प्रति भी. लेट इट चेंज थोड़ा टाइम में, शिफ्ट इट. आप लेट नाइट पढ़ाई करोगे कभी कभी, ठीक है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डूइंग इट एवरी डे, डूइंग इट प्रोडक्टिवली. ये दो चीजें. हाउ यू डू इट इज ऑफ लेस कंसर्न, यू हैव टू डू इट इज ऑफ मोर कंसर्न. दैट इज वेरी वेल सेड. क्योंकि कई बार जैसे स्टूडेंट्स को लगता है, आई वर्क एज अ मेंटोर, तो उसमें स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, जब इनिशियली आते हैं तो उनको लगता है कि वो 14 और 16 घंटे का टाइम टेबल मैं बना दूं. अब इनिशियली तो चलो ठीक है, आपको थोड़ा एंथुजियाज्म है, मे बी हो सकता है आप 1 महीने पढ़ लो, बट दे डोंट नो बस वो 1 महीने ही आप 16 घंटे पढ़ पाओगे. दूसरे महीने आपको राइट. 2 घंटे पढ़ने का भी मन नहीं होगा. सो बिल्कुल व्हाट इज बिल्कुल. इम्पोर्टेंट इज कि आप 8 घंटे पढ़ो, बट वो 8 घंटे आप एटलीस्ट 1 ईयर तक मेंटेन करो. एंड ये आई थिंक ट्रू. आप भी अग्री करोगे कि प्रीलिम्स और मेंस पास आ रहा है, तो मे बी आप अपने आवर्स स्ट्रेच कर सकते हो, 12 घंटे कर सकते हो, पुश पुश. 14 घंटे. डेफिनेटली ये ऐड करूंगा मैं कि जब नजदीक आ गया ना, तो फिर ये रूटीन क्या है, और ये हेल्थ, इवन हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. इट्स हाँ, नॉट थोड़ी रॉन्ग. बहुत बिल्कुल. आई हाँ. तब तो यू हैव टू स्टडी लाइक अ मैड पर्सन. जब मेंस आ गया आपका, जब प्री आ गया है, तो आई थिंक द रूटीन एंड द आवर्स गो आउट ऑफ द विंडो. द ओनली थिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको 2-3-4 जितने बार आपके रिविजन टारगेट्स हैं वो करने हैं. So हम्म. yes, with a caveat, whatever I said does not apply 20 days, 30 days उतना before the exam. Yes, well pointed out. बिल्कुल. और इसमें क्या होगा कि आप जैसे कि अगर आप पूरे साल थोड़ा ऐसे पढ़ोगे 8 घंटे 9 घंटे, तो आपके पास अपने आप मेंस के टाइम पे तो वो एनर्जी पता नहीं कहाँ से, वो तो सबके पास ही आ जाती है. बट प्रीलिम्स के टाइम बिल्कुल. पे भी डेफिनेटली आपका वो पीक करने का टाइम ना मार्च में आएगा. लेकिन अगर आप पहले ही खुद Right, को दिसंबर तक इतना एग्जॉस्ट कर दोगे, तो जो आपका पीक right, करने का टाइम है फरवरी से, तब आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी. सो right, right. दैट इज वेरी वेल सेड कि अगर आप अभी जून, आप बिगनर हैं, आप 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप जून से प्रिपेयर कर रहे हैं या अप्रैल से जब भी कर रहे हैं, तो अभी आपके लिए 8 to 10 आवर्स इज सफिशिएंट. और आप उसमें थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, मेडिटेशन करिए. क्योंकि स्टूडेंट्स को मुझे लगता है अल्टीमेटली ये उन्हें रियलाइज नहीं होता, जैसे कि आप सो नहीं रहे हो, आप बस 4-5 घंटे सो रहे हो, अब आपको पूरे दिन स्लीपी फील हो रहा Yes, है, तो वो yes. अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहेगी. बिल्कुल बिल्कुल. Okay. So next thing that I would like to ask is about your optional. पहले तो सबसे हम्म. ज्यादा जो स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि वो अपना ऑप्शनल चूज कैसे करें. और कई बार कुछ ऐसे मिथ्स Right. भी हैं कि कोई ऑप्शनल स्कोरिंग है, या कोई ऑप्शनल इस साल इस ऑप्शनल को बिल्कुल ही वो निग्लेक्ट कर दिया. सो आपने अपना ऑप्शनल किन फैक्टर्स को माइंड में रख के चूज किया. Right. तो सबसे पहले तो आई टेल मेरा बैकग्राउंड. मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, बट मेरा ऑप्शनल इज फिलोसफी. एंड फिलोसफी ऐसे भी नॉट सो कॉमनली ऑप्टेड फॉर ऑप्शनल है. तो व्हाट आई वेंट फॉर वाज टोटली एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पार्ट. आई हैव अ वेरी डीप इंटरेस्ट इन फिलोसफी विच आई यूज टू स्टडी कॉलेज के समय से. ठीक है. बट बिफोर गोइंग फॉर केवल इंटरेस्ट वाला पार्ट, आई डिड 4-5 और चीजें. So I narrowed it down to philosophy and psychology because both of these things were very close to my heart. I
know that I can study it for a very long time without getting bored. And I think first question that a person should ask before choosing an optional is, can you dedicate a lot of time to it and not get frustrated with it, not get bored with it? Because it will be what you study सबसे ज़्यादा, ठीक है? And it has the potential to carry you through इस exam में भी. So see, GS में no, even GS1 if we say, we have such a range of subjects. One में history है, geography है, in society है, and history में भी तरह तरह की history है. तो you will not get ऐसा bored उसको करते हुए. But एक depth of interest चाहिए when you are going for your optional. So again, भाई, first question that I ask myself is, which subjects can I spend a lot of time with? So that narrowed a lot of things down. तो सेकेंडली ये था कि डोंट चूज एन ऑप्शनल, एंड यहाँ पे आई बी अ लिटिल मोर रियलिस्टिक, कि जो अनहर्ड ऑफ हो, जिसके बारे में कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो, जिसकी कोई फैकल्टी ही ना हो, जिसमें अगेन यू मेंशन कि आई वुड नॉट से एक टोटल मिथ है, बट कुछ ऑप्शनल अगर डिफ्लेटेड ट्रेंड दे रहे हैं 3-4 years के टाइम से, तो अवॉइड इट अनलेस इट इज वेरी क्लोज एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग. हर एक में कैवियाट है. इट मे बी द वर्स्ट ऑप्शनल एंड हो सकता है यू आर द बेस्ट पर्सन इन इट. तो ऑप्शनल में तो अब रिलेटिव स्कोरिंग होती है ना? तो दैट इज आउट ऑफ द विंडो. बट इफ यू हैव नैरोड योर डाउन योर फील्ड्स 4-5 ऑप्शन पे, तो डोंट गो फॉर दैट ऑप्शनल जहां पे कि बहुत डिफ्लेटेड मार्किंग चल रही है, 250 भी क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है, 260 हाईएस्ट जा रहा है, इस टाइप का. एंड जहां तक मतलब पीपल से देयर इज अ रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी ऑप्शनल्स में, कि सम ऑप्शनल्स परफॉर्म बेटर कुछ टाइम, सम ऑप्शनल परफॉर्म, और ये सबके साथ होता है. तो इट शुड नॉट बी सच एन इम्पोर्टेंट मेट्रिक. दिस शुड बी एन इम्पोर्टेंट मेट्रिक कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी कैसी है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं क्या, फैकल्टीज हैं क्या जो अच्छी हैं, यू नो, इवन आई वुड से कि कोचिंग्स, क्योंकि ऑप्शनल के लिए आई फील कोचिंग्स हैव अ रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन टर्म्स कि देयर इज अ वेरी सेट पैटर्न टू ऑप्शनल्स. पीवाईक्यूज तोड़ मड़ोड़ के आते हैं ऑप्शनल में, ठीक है? तो एंड सिलेबस बहुत टाइम से चेंज नहीं हो रहा है, करंट फैक्टर बहुत कम होता है ऑप्शनल्स में. तो दे हैव अ लिटिल ग्रास्प, जो फैकल्टीज हैं, टॉपर्स उनके जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यू विल सी कि टॉपर्स बार बार आ रहे हैं वहां से. तो एक बार ऑप्शनल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यू नीड गुड मेंटर्स, गुड फैकल्टी, गुड, अगर कोचिंग है तो 3 months की बात है वो. तो ये दूसरी चीज होनी चाहिए. एंड तीसरी चीज आई वुड से, विच अगेन प्रीचिंग अगेंस्ट व्हाट आई डिड, बट आई थिंक कि कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव सीन मेरे फ्रेंड्स जो कि पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हैं परफॉर्म वेल जब वो पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, या इवन जो मेरे फ्रेंड्स हैं इंजीनियरिंग के, तो दे परफॉर्म ऑल्सो वेल व्हेन इंजीनियरिंग का लेते हैं. बट देयर इज अ कैवियाट कि अब मेरा इंटरेस्ट डिक्लाइंड आफ्टर इंजीनियरिंग एंड इम्प्रूव्ड इन फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट. योर इंटरेस्ट शुड कंटिन्यू आफ्टर यू हैव डन दैट डिग्री, है ना? तब इट्स अ वेरी लीथल कॉम्बो कि आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपके पास इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, आपके पास रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं उसको एक्सेल करने के लिए, देन गो फॉर इट. बाकी यस, ऊपर नीचे हैं, जस्ट मेक योर ओन डिसीजन. I believe this will help my students to now choose their optional. Okay, and you have scored really well in optional. That is a score of 270. So, what was your approach towards philosophy optional, which can help the aspirants who have chosen this optional? तो फर्स्टली स्कोर तो उतना अच्छा नहीं है. 270 डिसेंट सा स्कोर है, बिकॉज ऑप्शनल में पीपल एक्सपेक्ट 290, 300s. बट हाँ, देयर वाज अ रिलेटिव डिफ्लेशन. आई थिंक दिस ईयर फिलोसफी हाईएस्ट इज 276. तो ये होता है. That was very We should be humble of ready. you to say that it is not a good score. नहीं, you must know this. You have people in the process know it. Yeah. तो having said that, क्या कर सकते हैं ऑप्शनल के लिए? आई वुड गो फॉर दैट. तो ऑप्शनल के लिए आई विल से व्हाट आई डिड, बिकॉज दूसरे रास्ते वर्क करते हैं कि नहीं, आई डोंट नो. फर्स्टली एक बेसिक सा जो भी कोर्स हो बेस्ट फैकल्टी का आप देख लो एंड वो कर लो आप, ठीक है? यू विल, और यूपीएससी वाला, बिकॉज यूपीएससी का एक एक सिलेबस है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर, ठीक है? दे में अलाइन विथ दैट जो आपने पढ़ा है कॉलेज में एंड ऑल, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट दे आर आस्किंग एंड हाउ दे आर आस्किंग इट. वो आपको ये कोचिंग करवा देती हैं.
जो भी आपकी बेस्ट कोचिंग है उस सब्जेक्ट की, ठीक है। वंस यू आर डन विथ इट, अब आपका काम स्टार्ट होता है। वहां से क्या काम स्टार्ट होगा कि सेकंड जो सबसे यूजफुल रिसोर्स है वो टॉपर्स के कॉपीज एंड टॉपर्स के चैनल्स। टेलीग्राम पे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट टॉपर्स आर मेकिंग द चैनल्स नाउ, वरना वेबसाइट्स पे भी आपको मिल जाते हैं आजकल, राइट। व्हाट यू डू इज यू हैव स्टडीड द सब्जेक्ट। आप एक बार उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन उठाओ और खुद के आंसर लिखो एंड चेक फिर कि बाकी टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं। यू विल रियलाइज कि कितना बड़ा मार्जिन है। ओवर टाइम ट्राई टू फिल दैट मार्जिन, है ना। तो अब यू आर फिलिंग इट ऐसा ऐसा ऐसा, बट फुली कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है। इंप्रूव हो जाएगा अपना अपना कंटेंट। तो एक यू हैव योर बेसिक नोट्स, बेसिक कंटेंट जो आपने बनाया कहीं से, देन यू कीप एडिंग ऑन टू इट। एंड यहाँ पे फॉर ऑप्शनल नॉट फॉर जीएस, डेप्थ बहुत मैटर करता है कि आपने उसको कितना अंदर तक पढ़ा है। एंड ऑप्शनल में एक दो और चीजें जो ऐड कर दो आपकी, जो बुक्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जो उनके रेलेवेंट कोटेशंस हैं, जो डेटा फैक्ट्स हैं, जो करंट के एग्जांपल्स, सोशियोलॉजी के ले लो या फिर कोई भी, इवन फिलोसफी कुछ चीजों में भी गिव करंट के कुछ एग्जांपल पेपर 2 में। तो दोज बिकम इम्पोर्टेंट। आंसर राइटिंग सिन क्वा नोन है गुड मार्क्स के लिए। एंड मैंने, हाँ, दैट वाज माय फॉल्ट, मैंने उतने पेपर्स नहीं लिखे थे एज मच एज आई डिजायर्ड, ठीक है। बट पीपल शुड राइट इट, आई ऑलवेज रियलाइज इट बाद में, ठीक। तो आंसर राइटिंग से क्या होता है कि वी आर इन अ जीएस मोड आंसर लिखते समय, कि जितने पॉइंट्स दे सकते हैं दे दो, एक एग्जांपल दो, एक पॉइंट दो, एक डायग्राम दो। बट व्हेन यू कम टू ऑप्शनल नो, आंसर ही थोड़ा सा चेंज हो जाता है। They are these people are academicians who are checking your copies, right? So if you see, I took मेरे जो humanities के दोस्त हैं उनके papers, so they are writing answers in a very different way. उनका है कि दे हैव अ एनालिटिकल डेप्थ, एक एकेडमिक टच है उनके आंसर्स में, कि ये बुक में दिस थिंकर हैज कोटेड दिस, तो दिस अकॉर्डिंग टू हिम ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड यू नो वेन एवर दे गिव एक दो पॉइंट, तो दे आर एक्सप्लेनिंग इट एक दो थ्योरीज के तौर पे। तो द मोर यू कोट देम द मोर योर मार्क्स विल इम्प्रूव। तो यहाँ पे आई थिंक डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट शो करना जरूरी हो जाता है। एंड अगेन ऑप्शनल एक ऐसी चीज है जिसमें यू शुड गो ऑन वैल्यू एडिंग जितना हो सके। मगअप तो करना ही है, बट वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल में। What you did? फिलोसफी के लिए आई डोंट, हाँ What you वही did वही, for value addition in philosophy? हाँ, तो फिलोसफी के लिए whoever is watching it, मेरा थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, डोंट बी ओवरवेल्म्ड। मैंने मित्राज आईएएस से पहले तो किया, तो फर्स्टली आई रेड उनका कंटेंट 3-4 बार एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो इट वाज डिसेंट। बट इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 254 मार्क्स, ठीक है। तो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, यार ये तो काफी कम चला गया। तो आफ्टर दैट आई वैल्यू एडेड फ्रॉम इग्नू का, देयर इज स्टडी मटेरियल फिलोसफी का। Okay. देयर फ्रॉम देन उसके बाद टॉपर्स के 2-3 नोट्स आई से, कि पूरा का पूरा नोट्स आई सॉ, उनके कुछ अगर एक्स्ट्रा चीजें हैं तो आई डिड। बट उस वाले टाइम पे आई हैड अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन, बट आंसर राइटिंग कम थी, विच आई रियलाइज लेटर। तो आई गॉट 264 उस टाइम पे भी, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम आई ज्वाइंड एनलाइट आईएएस, महेश सर इज देयर, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट हिज, so what he does is he gives खुद से ही feedback, he evaluates each copy himself and then he himself gives feedback, which I saw was missing some coachings में. Okay. Uh, because sometimes the teachers are sub checking the copies, you know, they don't check all the copies, they let someone else check. So get your copies checked by someone who has seen this over a very long period of time. So he advised me, he tweaked a few things. I saw Enlight का notes भी, and then I value added वहां से. I would see online content थोड़ा थोड़ा. It did not convert as I would have desired, but I think it saved me decent score. So this was what I did. And if anyone wishes कि philosophy में कुछ और हो या notes वगैरह का, तो they can come through you, जो भी हो, I'll help. Okay, thank you so much. So what I have seen, one thing that you continuously did was analyzing from your mistakes. जो mostly लोग कई बार realize नहीं करते कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो तो सब सही कर रहे हैं, but something is definitely lacking in your preparation, जो आपको सही करने की जरूरत है।
So that is there. Now, another thing that I would like to delve upon is your interview marks. That I think you will also have to agree that is really high. So a score of 190. So और ये एक ऐसी स्टेज होती है जब लोग बहुत एंशियस हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस वक्त तो अब सब कुछ कर लेते हैं। और मार्केट में मुझे लगता है कि सबसे कम या में भी सबसे ज्यादा मिस गाइडेंस इस स्टेज के लिए है। डैफ गलत भरवा देंगे एक तो लोग बहुत ज्यादा कि आप कुछ भी झूठ लिखवा देंगे। सो व्हाट यू डिड फॉर दिस स्टेज? So interesting that you mentioned this. इसमें मेरी काफी mistakes थी जो I tried to improve. This was my third interview, and पिछले दो final results I missed by 28 and 25 marks. ठीक है, and I had काफी low interview marks. I had 154 मेरा first interview में, 160 second interview में, and 190 third interview. So the mistakes which I feel, and before saying this, let me just add one thing. There is a very high level of subjectivity involved in interviews में. Controllables बहुत कम है, तो don't fret बहुत ज्यादा कि इसमें आप क्या कर लोगे. And I think that is the reason for people's anxiousness. कि आप ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हो. तो जब ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हो तब तो और भी टेंशन की नहीं बात रह जाती है. तो having said that, subjectivity aside, जो कर सकते हो, let's come to that. फर्स्ट वाले में कोविड वाला टाइम था, तो इट वाज इंटरव्यू काफी जल्दी जल्दी हो रहे थे, तो उसमें ही मेरा था एंड इट वाज फर्स्ट इंटरव्यू. तो आई टॉक्ड अबाउट इट एक दो लोगों से एंड दे सेड कि नहीं नहीं, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट गो बी योरसेल्फ. तो आई वाज लाइक कि ओके. So I went and it was Anand sir's board and he asked me very pinpointed factual questions which were actually in a remote way related to my DAF. I had SDG in my DAF. So sir asked about SDG and MDG and then he started asking कि MDGs कौन से achieve हुए थे इंडिया में. तो and थोड़ा momentum गड़बड़ा गया and then so second thing that we should avoid is taking each question to heart. Every question is a new opportunity. You may be wrong, you may fumble in a few questions. It does not matter as long as you give some answers, some brilliant answers. And I think we should give credit to the board also. So they know that how little we know, and compared to them, how little experience we have. They are not looking for people who can awe them. They are looking for people who can be genuine and who can be decent. But we put so much pressure on ourselves that we have to come off as something brilliant. Just be normal and things will work out. So first attempt, I was underprepared. That I knew. So first learning, DAF should be so thoroughly prepared that remotely there should not be anything which you cannot answer. Because not answering questions from DAF puts a very wrong impression that you're a casual person. Right. Secondly, current affairs, they are reading उनके पास वही उससे वो अवगत हैं, तो वो आपसे भी वही पूछेंगे. तो current affairs, you have to improve your preparations मेंस या prelims के टाइम से. 2 newspaper people can start reading उस टाइम से. And topics की बहुत analytical depth is important. You cannot be superficial मेंस के आंसर जैसा कि 3-4 ऐसा है ये वो. They'll go into depth. If you say one thing, they'll say, अच्छा, how will you be able to do it? ये limitations हैं. Then you have to answer कि अच्छा ये कर सकते हैं. Otherwise, they'll know that you have mocked up something and come. So second interview में I prepared these things. ठीक है? And it was Smita ma'am's board. Second interview में तो again over relying on mocks is also very dangerous. तो mocks में feedback मेरा अच्छा था, but they said कि shorten your answers and just 2-line 3-line का answer 1 or 2 places. So I thought कि okay एकदम crisp answers देने होते हैं. So that was थोड़ा unnatural for me. ठीक, and I became थोड़ा सा rigid interview में. And I knew कि थोड़ा mechanical जा रहा answers. There was no flow to your answers. So these 2 things I worked on, and finally it was God's grace. The day was good. The panel was rewarding. And when it was my third interview time,
Again, Mahesh sir, my philosophy optional teacher, he said one thing. You have done enough, what was to be done. Before entering the room, detach yourself from this exam. Just go and have a conversation. And you are good at it, you'll have a good conversation. Just detach yourself. Don't think what will happen because of this. And I just kept this one thing before going into the interview hall. That yes, I have done my thing. Now I want to have a genuine conversation with good people. What's there to lose? And when that happens, so I think interview will go pretty much okay. Again, see, I think like what can be learned over here is definitely you have to prepare your draft. You have to be thorough with the current affairs. But in the end आपको थोड़ा अपने आप से वो नर्वसनेस या वो स्ट्रेस जो होता है जब आपको एंड मोरोवर जब आपको पता है कि आप प्रिपेयर्ड हो अब इससे ज्यादा आप कुछ Yes, कर नहीं सकते थे एंड आई थिंक दिस अप्लाइज right, इन एवरी स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन जैसे अभी प्रीलिम्स आने right. वाला है 16 जून को प्रीलिम्स है देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने काफी अच्छा कर रखा है बट दे आर जस्ट पैनिकिंग कुछ में भी आर्ट एंड Hmm. कल्चर के कुछ एक दो क्वेश्चन देख के बट यू हैव डन योर Hmm. पार्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री उसके बाद जो क्वेश्चन Right, आने हैं अब वो आने ही हैं और उसको अगर आप एक साल right. और भी पढ़ लेते तो नहीं सॉल्व होते वो आपसे सो आई थिंक ये चीज आपको किसी भी स्टेज पे एग्जामिनेशन पे खुद पे मे बी फेथ होना चाहिए कि आप जितना कर सकते थे आपने वो कर लिया है इसके आगे अब अगर होना होगा तो हो जाएगा और अगर मे बी इफ गॉड हैड सम अदर प्लान्स तो वो नहीं होगा मे बी Hmm. दिस इज व्हाट True. आई फील नहीं होगा तो भी अच्छा ही होगा यार ऐसा. यस आई थिंक एंड इफ द टाइमिंग्स राइट होना बहुत जरूरी है इस एग्जाम में. हम्म You keep pushing, and if the timings are right, everything will fall into place. And if even if it does not fall into place, I am pretty sure that people who have prepared so much will not lose anything in life. And I यस had a strict belief here. Wala. Definitely. Okay. Next thing that I would like to ask is that you have been preparing since a very long time. 2 बार इंटरव्यू तक जाना and what I feel is ये सबसे बड़ा setback हो सकता है किसी की लाइफ में इंटरव्यू से वापस आना. ऐसा मतलब पूरा 9 पेपर मेंस के दे रहे हैं 3-3 घंटे लिख रहे हैं बहुत मेहनत लगती है इस समय और उसके बाद वहां से वापस आ रहे हैं. So how you dealt with these challenges and what motivated you to keep going? Um, So see, I think you understand this that it's very difficult, not seeing your name in the final list when you are so close. Hmm. You know you are on the cusp of it, and had things been a little different, अलग होता. So there are positives and negatives associated with it. हम लोग इसको देखते हैं कि अरे जस्ट थोड़ा सा आ गया होता तो पार हो जाते. But you can also see कि यार you are so close. You just have to buckle up and give one more attempt. बिल्कुल. There are very few people that are so close to that, Hmm. achieving that, right? So it can be a motivator also. So I had ye belief. Secondly, again, by God's grace, I have very few quality people around me, some very close friends, and they are very few in number who I say frequently in touch with. So they have been great motivators, and their belief in me instilled and improved my belief in this. Right. So, and yeah, and in those lows, you need those people. So, second, ye cheez thi. Third thing is, again, it was a coincidence कि after the final results, prelims was so close that I did not have time to process anything. Hmm. So it was like 5 days, 6 days. There is no time to think and mope about it. Hmm. When you have set a mark for yourself, you just, because I'm from philosophy, what Lord Krishna says, as a warrior, your dharma is only to fight. Pick your weapons and fight. So I believe in that. That you cannot distribute the fruits of this. So, and even if you desire some fruits, what is left with you is to only work. Hmm. Only then those fruits might come to you. So I think these 2-3 things. Baki to, as I've told you, routine wala part. कि do some physical workout, do some meditation, thoda spiritualism, and yes, that helps. That was great to hear.
Any valuable lessons that you learned from this UPSC journey? Valuable lessons. Uh, See, so first thing is, yes, we've talked about this. We have to be very honest with ourselves. We can't fool ourselves in terms of, are we putting in correct amount of effort? Are we improving upon the mistakes that we have made? Are we justifying the time and resources that we are putting in? So honesty is first thing. Consistency is second thing. What you are doing, you have to do it every day. And there will be burnouts, but burnouts cannot pull you out of this exam. Once you have done it, take 1 day, 2 day off, then get back to it. Okay? And third thing, invaluable lessons, as I said, people. We should value ourselves in terms that our time is important and who we are giving our time to is very important. And in terms that we are social beings, as much as we expect others to be available for us, we should also be available for them. So I think what this exam requires is a person with a good social, emotional, physical, and mental setup. And we should try to build that along this entire process. Okay, Atul. So, what advice you would give, like to give the UPSC aspirants who are maybe currently feeling overwhelmed or discouraged? Uh, so let's go back to the beginning of the conversation. You asked me ki, what motivates you for this exam. So that would be my advice to anyone who is feeling demotivated or discouraged. Okay, remember ki why you started this journey, which was not an easy journey to begin with. And deep down, you know, okay, there are so many pitfalls and such a low success rate. So if the why is strong, the how will take care of itself. So that has to be very clear in our mind. Having said that, second important thing is why should not be fleeting. Consistency and discipline are two core ingredients for this exam. Many people misconstrue this as intelligence. This is an exam for intelligent people from IITs, IIA, top institutions. I have seen year and year people who have been very close to me. Only two things, and I think they clear IITs also because of these two things. Yeah, जो भी top exams हैं, they have consistency and they have discipline. If you can manage these two things, you will clear this exam. There is a very high probability. Obviously, 100% कुछ नहीं होता है. Third, be honest with yourself that जो भी आप टाइम पुट इन कर रहे हो, आर यू स्टडीइंग इन दैट टाइम? जो आप टारगेट सेट कर रहे हो वो रियलिस्टिक है कि नहीं? जो आपने खुद के लिए सोचा है कि इस टाइम पे आपको यहाँ होना है, वो आप हो कि नहीं? Are you not putting your time into things that hamper you? And these may be a lot of things which people at our age know. तो ये वाला ऑनेस्टी खुद से सबसे ज्यादा important है. We can fool our parents, we can fool the society, but we know that deep down if we are doing anything wrong कहीं पे, तो we will know. And अगर ये है, तब तो you will detach from this exam because you know that you have put in what was required. And so, एक और question that you have to keep asking, am I doing enough? And if the answer is yes, so that's it. So I think these are my 2 cents for everyone in this exam. Baki people are excellent. People are full of value to the society in whatever way they are. Even if a person is doing nothing, so they are of value. See a child, a child just cries and eats all day, but is of such value to her mother, her parents, her grandparents. So whatever you are, human dignity will trump everything. So just one more advice: don't associate your entire worth with this exam. People create this exam. This exam does not make people. So at the end of the day, Swami Vivekananda said one thing: even God, to become God, must become human first. So remember the potential of the human being. And with that, just keep pushing and you'll reach places. If this, then wonderful. If not this, then better. So that was very helpful. Thank you, Atul, for your invaluable insights and experiences.
Till then, to our viewers, I believe that UPSC examination requires hard work, dedication, and right guidance. However, you can clear it with unwavering grit and determination. Till then, keep learning, keep striving, and never give up on your dreams.